Welcome to the Formula Foundation, Simpsons 1/3 rule. You know there is another Simpsons rule named as Simpsons 3/8 rule. But here we will discuss only Simpsons 1/3 rule. So let's suppose y is equal to f of x is a function or curve and we want to evaluate its definite integral. So there are several theorems of integral calculus to evaluate the definite integral. Hopefully you remembered those theorems. But these theorems fails to deliver if antiderivative of the integral cannot be found in terms of elementary functions. Means ऐसे functions जिनको algebraic और transcendental function के linear combinations में express किया जा सकता हो, right? So वैसे तो Simpsons rule definite integral evaluate करने का general rule है, but particularly numerical integration ऐसे functions के लिए है जो algebraic और transcendental function का linear combination है. And Simpson's rule is also a part of numerical integration, and that is very interesting. So let's start the derivation, and let's suppose it is the graph of this function y is equal to f of x. It is y is equal to f of x, right? Now we have to find the definite integral of this function in the interval a to b. Means we are required area under this curve in the interval a to b, right? Let me take 3 points on this curve. Let's suppose it's a point whose coordinates are x naught, f of x naught. It is another point, its coordinates are x1, f of x1, and x2, f of x2. It's the third point. And it is the small sub interval minus h to h, right? ऐसे समझ लीजिए कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और ये जो इंटरवल है माइनस h to h ये एक बहुत ही छोटा इंटरवल है, राइट? नाउ देयर इज़ अ टेक्निक कि अगर हम इन 3 पॉइंट से एक पैराबोला ड्रॉ करें, इस तरह पैराबोला ड्रॉ करें कुछ इस तरह, और फिर इसी तरह अगेन 3 पॉइंट्स लें. इस तरह के दूसरे 3 पॉइंट्स में से जो फर्स्ट पॉइंट है वो प्रीवियस 3 पॉइंट्स का लास्ट पॉइंट हो, राइट? मीन्स इसी वे में हर 3 पॉइंट से इस तरह पैराबोला ड्रॉ करें और फिर हर एक पैराबोला का इंडिविजुअली डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट करें एंड देन उनको सम अप करें. तो हम देखेंगे कि सम अप करने पर जो एरिया होगा वो एरिया अंडर दिस होल कर्व होगा फ्रॉम ए टू बी, right? And that is the technique which Simpsons gave. Now question arises that how to find area under this curve formed by these 3 points. So you know curve formed by these 3 points is a parabola, that is ax square plus bx plus c, and let's suppose it is a function g of x. Means equation of this parabola is ax square plus bx plus c, and it is the function g of x, right? And if we integrate this parabola in the interval of minus h to h, then we found the area under this parabola, right? So integral from minus h to h of g of x dx is equal to integral from minus h to h ax square plus bx plus c, and it implies that ax cube upon 3 plus bx square upon 2 plus cx minus h to h. Now applying limits, we have ah cube upon 3 plus bh square upon 2 plus ch minus ah cube upon 3 plus bh square upon 2 minus ch, and ah cube upon 3 plus bh square upon 2 plus ch plus ah cube upon 3 minus bh square upon 2 plus ch. So you cancel and add these two terms. So 2 ah cube 2 upon 3 ah cube, and adding these two terms we have 2ch, right? Now taking h upon 3 as common,
h upon 3 as common, we have 2ah square plus 6c मीन्स h अपॉन 3 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2ch, राइट। और h अपॉन 3 इसलिए कॉमन लिया कि जो सिम्पसन्स रूल का जनरल फार्मूला है उसमें इसी तरह है, राइट। रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पैराबोला फाउंड बाय दीज 3 पॉइंट्स, और इसी तरह के इस कर्व में बहुत सारे पैराबोलाज होंगे, राइट। नाउ लेट वी इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस पैराबोला एट दीज 3 पॉइंट्स, और मीन्स वी आर इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ g ऑफ x एट दीज 3 पॉइंट्स, और जो वैल्यू इस पॉइंट पर g ऑफ x की होगी वही वैल्यू इस पॉइंट पर f ऑफ x की होगी। मीन्स g ऑफ माइनस h is equal to f of minus h and g of 0 is equal to f of 0 means जो दो फंक्शंस है g of x और f of x, इन दोनों फंक्शंस की इन 3 पॉइंट्स पर वैल्यू सेम होगी, राइट। एंड वी आर गोइंग टू evaluate value of functions at these 3 points, right? So let's suppose it is equation A and f of minus h is equal to g of minus h is equal to g of x हम यहाँ लिख लेते हैं, g of x is equal to a x square plus b x plus c। सो वैल्यू होगी माइनस h पर a h स्क्वायर माइनस b h प्लस c, और ये है इक्वेशन 1, राइट। नाउ f of 0 is equal to g of 0 is equal to c and f of h is equal to g of h is equal to a h square plus b h plus c, right। Now adding 1 and 3, we have f of minus h plus f of h is equal to 2ah square and plus 2c. Now f of x naught can be denoted as y naught, f of x1 can be denoted as y1 and it is y2, right? So f of minus h is equal to y naught, f of 0 is equal to y1 and f of h is equal to y2, right? So f of minus h is equal to y naught, f of 0 is equal to y1 and f of h is equal to y2, right? Now substituting these values, so f of minus h is equal to y naught plus f of h is equal to y2 is equal to 2ah square plus 2, and what is c? C is equal to y1, right? Or it implies that 2ah square is equal to y naught minus 2y1 plus y2, right? Now substitute this value in a, right? So substitute the value of 2ah square in a. So we have h upon 3 y naught minus 2y1 means 2ah square plus y2 plus 6y1 because c is equal to y1, 6y1, right? Or h upon 3 y naught plus 4y1 plus y2, right? Now ये क्या है? ये है area under this parabola from minus h to h, and it is also the area under the curve of a function f of x from minus h to h. It means that it is equal to definite integral, means integral minus h to h of f of x dx, and it is approximately equal to, right? Not equal to but equivalent or approximately equal to, right? Now we take
another 3 points and find the area under the curve in the small interval of the same size. So which will be h upon 3 y2 plus 4 y3 plus y4, राइट. क्योंकि दूसरे जो 3 पॉइंट्स होंगे उनका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा x2 y2, राइट. सो जो सेकंड टाइम 3 पॉइंट्स लेंगे उनका जो पैराबोला बनेगा उसका एरिया अंडर द कर्व वो ये होगा. और जो पॉइंट्स होंगे, फाइल पॉइंट्स आर x2 y2 x3 y3 and x4 y4, right. So from this sequence of formulas you can easily guess the general form, that is h upon 3 y n minus 2 plus 4 y n minus 1 plus y n, right. Means this is the general formula for area under a parabola formed by 3 points. और generally 3 points होंगे x n minus 2 y n minus 2 and x n minus 1 y n minus 1 and x n y n. Now adding these individual areas under the parabola, we get the area under this curve f of x over the interval from a to b. Means we have area under the curve f of x from a to b is equal to h upon 3 common है, so h upon 3. Now y naught and y n, y naught plus y n. मीन्स ये तो हमने दो एरियाज फाइंड किए हैं. इसी तरह के बहुत सारे पैराबोलास होंगे और उनका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे, राइट. और फिर उनको सम अप करेंगे. तो जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा y नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 और 4 के साथ ऑड नंबर्स में है y, मीन्स y1 प्लस y3 एंड yn माइनस 1, y1 प्लस y3 और इसके बाद होगा y5 प्लस अप टू yn माइनस 1, राइट. प्लस नाउ इसका जो थर्ड पॉइंट है वो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा. इट मीन्स दैट y2 रिपीट होगा. मीन्स जो इवन पावर है वो रिपीट, जो इवन सबस्क्रिप्ट है वो रिपीट होगी. मीन्स y2 प्लस इसी तरह 2y4. तो 2 यहाँ कॉमन लिखते हैं और y2 मीन्स जो इवन सबस्क्रिप्ट है वो रिपीट होंगी 2 दफ़ा. तो y2 प्लस फिर y4 भी 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि जो इसके बाद जो 3 पॉइंट्स होंगे उनका फर्स्ट पॉइंट y4 होगा, प्लस फिर y6 अप टू yn, राइट. सॉरी, ये है n माइनस 2, क्योंकि n तो यहाँ पर लिखेंगे और जो इवन सबस्क्रिप्ट्स हैं उनमें n माइनस 2 एक लास्ट इवन सबस्क्रिप्ट होगी, राइट. लेट मी सॉल्व अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट मोर परफेक्टली. क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 10 ऑफ फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx by using Simpson's rule. So let h is equal to 1. Let h is equal to 1, where h is the length of subinterval, right? So dividing the whole range of integral 0 to 10 into 10 equal parts, right? Or you can use the formula h is equal to b minus a upon n, where n is the number of subintervals and h is the length of a subinterval. Means अगर हमें n यानी number of intervals given है तो we can find the length of a subinterval, and if we are given h means length of a subinterval, then we can find the number of subintervals, right?
सो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब जो इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है उन पर हर एक पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इवेल्यूएट करेंगे, राइट। तो ये है एक्स और एफ ऑफ एक्स। सो एक्स होगा 0 1 2, लेंथ है 1, एच इज इक्वल टू 1। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ लिख लेते हैं 10, राइट। नाउ 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी 1, 1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी 0.5 और 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी 0.2, 0.1, 0.0588, 0.0588, राइट। और x इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू होगी 0.0384, 0384 एंड 6 पर वैल्यू होगी 0.0270 और 7 पर होगी 0.02, 8 पर 0.0153 एंड 9 पर 0.0121 और 10 पर वैल्यू है 9.9 इंटू 10⁻³ राइट। तो ये है वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 to 10। सो ये है x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 एंड x10, राइट। और y0 इस पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, ये है y9 और ये है y10, right? Therefore, Simpson's formula reduces to integral from 0 to 10 of 1/1 plus x squared dx is equal to, so ये है general formula for Simpson's rule and in our question yn is equal to y10 because हमने 10 सब intervals बनाए हैं, right? So this formula reduces to h/3 y0 plus y10 plus 4 times y with odd subscript. So 4 y1 plus y3 plus y5 plus y7 plus y9, right? Means y with odd subscripts y1, y3, y5, 7, 9 and 9, right? Now plus 2 and y with even subscripts. So y with even subscripts y2, y4, y6, y and y8 because we have written y10. So y2 plus y4 plus y6 plus y8. Now substitute the values. So integral from 0 to 10 1/1 plus x squared dx is equal to 1/3 because here h is equal to 1 means length of subinterval is equal to 1. Now substitute the values of y. So now I have substituted the values and final answer होगा integral from 0 to 10 1/1 plus x squared dx is equal to, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर होगा 1.431659, राइट।
हो सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर इस आंसर से थोड़ा डिफरेंट हो, बिकॉज आई हैव रिटन ओनली अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट, दैट्स इट.